we were sleeping, and suddenly I could see there's a movement happening around, and I thought Rihanna has woken up in her sleep. So, she was not responding the way I responded her, expected her to come closer to me. And I said, what's wrong with her? So that's when I put on the night lights in my bedroom, and we realized she had convulsions and didn't know what it was. फिर हमने दिखाया जब डॉक्टर को, तो मेरे को अच्छे से याद है कि वो ऐसे गोल 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 केबिन में घूम रहा था, और डॉक्टर ने उसकी तरफ पॉइंट आउट करके बोला था, ये जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, इसको ऑटिज्म है। एंड आई स्टिल हैव गूज़बम्प्स इन माय बॉडी। वो सीन जब मुझे याद आता है कि वो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, वो वर्ड्स। This is not fine. It was a situation, where rakshak hi bhakshak ho gaya. Where I am supposed to be actually the protector of my child, but I am the same person whom my child needs to be protected from. क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद तो और ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि कभी बीमार, कभी कुछ, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो माँ बनना कोई इजी टास्क नहीं है। Hi, I'm Dr. Sarika Samant. Hello friends, myself Deepali Khanna. Hi, I'm Dr. Janice Moraes. हाय, मेरा नाम निरुपमा भाटिया है। I am a mother of 2 children. I'm a mother of 8.5-year-old twins. साथ में 2 बच्चों की मदर भी हूँ। And mother to a girl child. I think I love the tag of being a mother because thanks to my daughter who's given me this. I'm a dentist by profession, and I'm also a psychologist and parenting coach. And it was not my actual dream to change my career path, but the journey of life, the journey of motherhood has got me here, where today I am doing more of coaching and counseling than dentistry, what I really worked out. मैं अपने घर की क्वीन हूँ। Leadership and a business coach, and a corporate leader for over 2 decades. Also an independent director. I am working as a special educator. Special educator in the sense I deal with the children who are having problem in education, like kids like ADHD, dyslexic, kids who are facing problem to clear their 10th standard. First memory, more than holding a daughter in my hand, my first memory I have when I gave birth to her. So I still remember on birth bed I had given her birth in the Salanantar, they had kept her Vasula. She had beautifully dark curly hair and pretty long, and she had her eyes rolling. जो मेरा बड़ा बेटा है उसको ऑटिज्म है, लेकिन मेरी इन बच्चों ने मेरे को बताया कि मैं एज अ पर्सन मैं क्या हूँ। Never really thought of what motherhood would be. We never prepare for ourselves as a mother. Like wherever you go for a trip outside, you learn about the country. You want to do some course on digital marketing, there is a course. But when it comes to parenting, something so important like getting a human being into your life, we don't really put so much of our head into it because we see everybody doing it. I can't say no that motherhood is this way, that way, never. आप ही का तो खून है, आप ही नहीं तो अपने बॉडी में से एक बॉडी पार्ट बना के दिया है। हाउ यू कैन से दैट यू कैन नॉट बी हैप्पी विद दैट? कितनी भी तकलीफें आए लेकिन यू विल बी ऑलवेज हैप्पी। उनकी खुशियों में खुशी, उनकी दुख में दुख, इट गोज दैट वे। Now that was a difficult part in that's the start, the day one when I had to start feeding both my babies. I think that's when the difficulty started, and I had to feed 2 babies, so obviously very, very difficult. It's somewhere it's the sense of responsibility, or you're stubborn or something. You just want to learn it, you want to do it for your children. I think you don't see yourself beyond your children. That's what I did. I always felt as a mother, like if I have to feed my babies, that is one thing that only I can do for these 2 people. It is their rights, it is my duty. I mean, that's not true, but that's what I felt, I very strongly felt, and I pushed myself towards that. तो मैं खुद उस टाइम एक बच्ची ही थी, पहला बच्चे के टाइम इतनी कुछ समझ भी नहीं होती है, तो मेरे को नहीं पता चल रहा था कि ये कोई
बड़ी चीज़ भी हो सकती है। मैंने जब 1.5 ईयर्स का वो हो गया और अपने नाम को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था, बुलाने पर नहीं सुनता था और अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था, तो मुझे नहीं इतनी समझ थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं। मेरे इन-लॉज़ ने, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आप एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं कि शायद कुछ चैलेंज हो। So I think nobody teaches you to be a mother. It just comes with you. Um, though you may like kids, दूसरों के बच्चे, कुत्ते बिल्ली, okay, it's a very momentary stuff. You know, 10 minute प्यार से कर लो, but it's a very different story when you have to clean them, when they're nasty, when you are nasty, okay, but you still have to do the work. So motherhood is something that nobody teaches you, tells you. This is how you navigate in the journey. मेरे हस्बैंड का कफ बहुत बढ़ता जा रहा था. आई डेंट शो टू माई इनके फ्रेंड को कि इनको कोविड हुआ है या मुझे कोविड हुआ है. वी जस्ट वेंट नॉर्मली ओवर देयर, बिहेव वेरी नॉर्मली. वहाँ गए, बैठे, और जैसे मेरे हस्बैंड जैसे कहते हैं ना, उस बेड पे बैठे, कैजुअलिटी वार्ड के बेड पे, एंड ऑटोमेटिकली दैट ऑक्सीजन वेंट डाउन टू 65. That was the indication that the doctor then said to us that he is COVID. So Rihanna is a beautiful child. She was born normal and a beautiful girl, but I think in 6th month, um, one dark night, I don't know, we were sleeping and suddenly I could see there's a movement happening around, and I thought Rihanna has woken up in her sleep, so you know, she's moving around in the bed. So I kind of looked out for her and tried to call her closer to me, and I think she was just 6 months and she was not responding the way I responded her, expected her to come closer to me. And I said, what's wrong with her? So that's when I put on the night lights in my bedroom and we realized she had convulsions and didn't know what it was. We ran to Ghatkopur to our pediatrician. He said, time to do CT scan immediately. We did a CT scan, we did EEG. And that's when the whole journey of hospitals and doctors and getting kicked from one end to another started. And I still don't have answer. Why this happened? What did I do wrong? Or what I could have done better? But I also hold stupid guilt. I remember I used to read a book before giving birth to Rihanna, you know, about all the small illnesses that of a kid needs to be handled, from fever to cold, cough, or anything at all that. And there was one chapter which I left it was on epilepsy. And I don't know why I left it. Maybe I thought ऐसा कुछ होता ही नहीं है, or maybe I've not seen it. And I still remember and I hold it, why didn't I read that one very chapter? And that is one episode that ended up happening in our lives. फिर हमने दिखाया जब डॉक्टर को, तो मेरे को अच्छे से याद है कि वो ऐसे गोल 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 केबिन में घूम रहा था और डॉक्टर ने उसकी तरफ पॉइंट आउट करके बोला था, ये जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, इसको ऑटिज्म है. एंड आई स्टिल हैव गूज़बम्प्स इन माय बॉडी. वो सीन जब मुझे याद आता है कि वो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, वो वर्ड्स. You would end up with backache and you would end up with weight gain and all those things if you don't rest really. So good thing is I took that rest. I had that support. I think if mothers have support, they will be awesome mothers. They will not be the mothers who, you know, we show in the TVs जो हमेशा चिल्लाती रहती है. When a mother is shouting, चिल्लाती रहती है because she is alone and doing so much, right? So if you want a peaceful, calm mother, start supporting her. If I go and ask something, उनको लगेगा ये माँ बनने के लायक नहीं है. People will start judging me. So out of that fear, I kept things inside. And there were problems, teething issue, I didn't know what to do. The only thing I was doing is चलो Google में जाके search कर लिया. बच्चा ये नहीं खा रहा है, बच्चा 6 मंथ में क्या खाएगा, आई डोंट नो, माँ तो सब कुछ जानती है, किसको जाकर पूछूं, चलो गूगल में पूछ लेती हूँ. सो यू नो ऑल दोज थिंग्स आई वाज रिलाइंग ऑन सम सोर्सेज हियर एंड देयर बिकॉज आई डिडंट नो वेयर एल्स टू गो. नहीं तो वो तो आ जा रहे थे, सब कुछ था, लेकिन किसी को कुछ कोविड नहीं हुआ. लेकिन कहते हैं ना, सिर्फ वो मुसीबत
हमारे गले ही पड़नी थी उस टाइम पे. इट वॉज रिटन ओवर देयर कि भगवान ने लिखा था कि भाई अभी टाइम आ चुका है, द डोर इज ओपन फॉर माई हस्बैंड टू गो ओवर देयर. क्या करेंगे ये नहीं समझ आ रहा था हमें. तो उनको इतना भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं उनके लिए वापस आ जाऊँ, बच्चों के लिए वापस आ जाऊँ एटलीस्ट. कितना एक्सप्लेन किया, पूरा दिन एक्सप्लेन कर कर के दिन निकल गया. लेकिन 4 दिन हो गए. मतलब वो जो समय था जब when he shouted that I will commit suicide, he was just shouting, और immediately पूरे parameters down हो गए and they got said, the doctors shouted from there, put him immediately on ventilator. I don't know how, क्या उनको होशो आवाज़ में वेंटिलेटर पे डाला, क्या उनको बेहोश करके डाला, कैसे किया होएगा वो मैं सोचती रहती हूँ कि क्या किया. You know, I remember as school friends, college friends, we used to meet for our birthdays. Then we started meeting each other on wedding days. Then we met on the first birthdays or the name ceremonies. And in my case, I had started over a period of time withdrawing because everybody's kids were progressing. I mean, I had a very close friend. Where we've shared the delivery notes. You know, her daughter, my daughter is 13 days gap. Today also her daughter is beautifully settled abroad studying, and I'm still lost. You don't have answers to so many things, and I carry that guilt as a mother. या जो भी है, बहुत सारे टेस्ट होने के बाद छोटे से बच्चे को गोदी में लेके बैठी रहती थी जिसके सिर में वायर्स लगी रहती थी और फिंगर्स क्रॉस करके भगवान से प्रे करती रहती थी. आंखों में आंसू होते थे कि भगवान सब ठीक निकले. मेरे बच्चे कुछ 1 to 2 year old थे and I am standing here and very clear image I have of my daughter standing to my right side and my son is to the left side. And both of them are crying and they are whining for no rhymes or reason. And at least at that time I felt कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, चुप हो जाओ. And I remember बहुत जोर से मैंने चिल्लाया और बहुत जोर से चिल्लाकर मैंने बोला, what more do you want? I'm doing everything for y'all. Then why are y'all crying? Because somewhere I think I went into this victim mode. I just shouted at my children. And then my daughter who was standing to my right side, I still remember the way I shouted. It would have been obviously so scary that she looked very startled and she started running behind. She took 2-3 steps. She went behind, she's crying, and then she took a pause and then she came back and she hugged me. Because she went behind because she got scared of the way I was shouting. And then she came back running to me and she hugged me because I am her safe place. And at that point, I felt, oh my God, Janice, what has happened to you? This is not you. I immediately bent down. I hugged my daughter. I hugged my son. And I sat with them. I started crying then because that wasn't me. I realized that there is something which has taken over me. This is not fine. It was a situation, where rakshak hi bhakshak ho gaya. Where I am supposed to be actually the protector of my child, but I am the same person whom my child needs to be protected from. I never realized for 17-18 months, I didn't realize that I was having postpartum depression. फिर 4:45 को उनका कॉल आया मुझे कि आप आइए इमीडिएटली, ही इज़ नो मोर. एक 10 मिनट का हम CPR टेस्ट करेंगे. अगर CPR से रिवाइव हो गए तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो देन वी आर गोइंग टू डिक्लेयर. जब तक हम 10 मिनट में वहाँ पहुँचे, हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से एरिया में, कौन से बिल्डिंग में है. हम जब तक सॉर्ट आउट हुआ, सब कुछ हुआ, हम काउंटर पे पहुँचे तो हमको पता चला कि ही इज़ नो मोर. ही वॉज टोटली, they declared it, he's dead. हम लोग एक एम्बुलेंस में थे. वहाँ एम्बुलेंस में हम बैठे हुए हैं.
साथ में बॉडी दूसरे एम्बुलेंस में जा रही है, वहाँ से LIC एजेंट मुझे कॉल कर रहा है, मैडम आपके हस्बैंड की पॉलिसी है, आपके हस्बैंड की पॉलिसी है जो आपको हेल्प करेगी, टेंशन मत लीजिए। ऐसे पॉलिसी, मैंने पॉलिसी को कच्चे में डाली, मेरे को हस्बैंड चाहिए, पॉलिसी का क्या करूँगी? But I think you cannot escape and still run away from so many other reality which was happening. I was back home. Rihanna did have her own episodes. Her medications have been heavy. She has been put on heavy medications. I will say, used to give her around 3 or 4 types of drugs 3 times a day. So, in case of epilepsy or convulsions, what happens is the doctors give you medications to kind of put your brain off to sleep, so there are not these short circuit episodes that happens. But since you put your brain off to sleep and slow down things, your milestones are delayed, your development is delayed, and it was a vicious thing. Which devil to pick up on? I think second or third day when I was talking to her, she said some XYZ friend came and said, I can't play with you. And I said, why? Why did she come and say that she can't play with you? She said, no, her mama said don't play with Rihanna. So everyone does want to connect and correlate with successful people. That was another hard-hitting fact. Since Rihanna was not so called normal as per the societal definition, the other mothers or maybe other human beings have stopped their kids to even mingle with somebody like Rihanna, who is so kind and caring. And you realize, forget kids, what complaints will you have from kids when there are human beings and parents who are so biased? After that, of course, it's not कि overnight मैं एकदम सुधर गई और मुझे गुस्सा नहीं आता था और मैं बहुत बेस्ट मदर बन गई, ऐसा बहुत काम मदर बन गई, ऐसा तो नहीं हुआ. बट ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ रीडिंग आई स्टार्टेड डूइंग, बहुत सारे वीडियोस देखने लगी एंड ऑटोमेटिकली यूट्यूब में ऑडियो बुक्स भी जब मैं रीड करती थी, सब बुक्स आ रहे थे जो विच वर मेकिंग मी अ बेटर पेरेंट, अ बेटर पर्सन, गेटिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड पेरेंटिंग के ऊपर. सो आई थिंक इट वाज अ जर्नी व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम दैट मोमेंट. द मोमेंट हैपेंड, a decision was made, and a sort of a transformational journey started. It was 26 August 2020, exactly after my father's 1 month, we lost him. And it was like two people in 1 month. तो जब हम इनका कर रहे थे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है हमारे घर पे इस चीज़ का, सब कुछ वही हो रहा है. And the worst part was that it was गणपति टाइम. कहते हैं ना गणपति बापा आने वाले थे, तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे विघ्न हरता है. हाँ, तो हमें ऐसे लगने लगा, थोड़ा पॉजिटिविटी आ गई कि माई हस्बैंड विल कम बैक. ओके, गणपति बापा आ गए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा लक लेकर आएंगे. इट वॉज नॉट सो. इट वॉज नॉट सो. हमने जब अस्थियां विसर्जन करने गए, क्योंकि गणपति आए हुए 4 दिन ऊपर हो चुके थे, तो वी हैड सेड डिसाइडेड कि जब भी पवन वापस आएंगे, भले गणपति जी का टाइम निकल चुका भी होएगा, भले 15 दिन 20 दिन बाद जब भी आएंगे उनके हाथों से विसर्जन कराएंगे. लेकिन कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि हम विसर्जन कर रहे हैं यहाँ पे इनकी अस्थियां और यहाँ पे गणपति बापा की. Schooling hasn't been easy. They haven't got accepted. I remember one of the schools in Chembur. I've been going to all schools with special needs. We were going, I wanted an admission, frankly speaking, because it was an international school and they were looking at extracurricular activities more than the curriculum part of it. And I was called after 2-3 days of observation, and we were rejected. And I was like, why? What happened? Because Rihanna is a very well-behaved child, though with a little low IQ and slow in understanding. She's a very well-behaved child. No issues in that way. And I was like, what's the concern if I can understand? And they had a big list of complaints saying that, she couldn't do this, she couldn't do that, she couldn't do this. And I said, what she couldn't do? Oh, she couldn't draw a girl. So I said, क्या हुआ? So she said, we asked her to draw a girl. तो उसने एक मुंडी बनाया, 2 हाथ बनाए, 2 पैर बनाए, and उसको लड़की बनाने को नहीं आती है. So I was like,
तो ऐसे नहीं बनाते तो कैसे बनाते हैं, राइट? मतलब मेरे को खुद नहीं मालूम है हाउ टू ड्रॉ अ गर्ल। आई सेड मैंने ही उसको ऐसे सिखाया। ही सेड ग्रेप्स ऐसे ऐसे बनाए। आई सेड पहली चीज, इफ द चाइल्ड वाज नॉर्मल आई वुड नॉट इवन कम टू अ स्कूल विद स्पेशल नीड्स, and if you are not going to be accommodative, then who's going to be? And I realize we are talking about the world where everyone should be acceptable and we have a right to live. Here I was struggling for an admission even into a school with a special needs because my girl couldn't draw a girl figure in. And who knows how to draw a girl figure in? Even I don't know how to draw. लेकिन ये विडंबना है हमारे इधर इंडिया की कि मतलब यहाँ पे कि लोगों की सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं है और स्कूल्स में भी एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ की। तो मेरे स्कूल्स में एडमिशन अगर बता के लेते थे कि ऑटिज़म है तो मिलता ही नहीं था। आज भी अगर कुछ स्कूल्स ले लेते हैं ऑटिज़म बताने के बाद भी, तो भी बाद में टॉर्चर करते हैं। आपको 8th के बाद तो निकाल ही देंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि 8th के बाद स्कूल से निकाल देंगे, क्योंकि उन्हें अपना 10th का रिजल्ट नहीं बिगाड़ना, या उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे या नहीं बिगाड़ना, या टीचर्स आर नॉट इक्विप्ड और नॉलेजेबल कि इन बच्चों के साथ कैसे डील करना है उनको। वो लोग सिर्फ स्पेशल का टैग देखते ही डर जाते हैं, हालांकि कुछ ऐसा खास स्पेशल नहीं है, दे आर जस्ट डिफरेंट। It has been a slow journey, but along that now बहुत कुछ मैंने अपने आप को चेंज करने का ट्राई किया that moment में अपने बच्चों के लिए, and honestly I feel मैं काफ़ी सुधर गई अपने बच्चों के वजह से, अपने बच्चों के लिए मैं काफ़ी सुधर गई। So because now I wanted to be a calm parent, I started working a lot on anger management, my own anger management, because वो दिन जो मैं I think वो मंजलिका का रूप धारण कर दिया था, I was so ashamed of myself. शायद मैंने ये बात नहीं बताई है, लेकिन जिस दिन मेरे हस्बैंड की रात डेथ हुई थी, हम उनका क्रेमेशन करके रात को आए थे, बच्चे सो चुके थे। मैं घर में उस समय क्या कर रही थी आपको बताऊं? मैं उस समय मैं घर में सब ड्रॉर्स खोल के कॉइन्स, नोट, आपको पता है सबके घरों में कहीं ना कहीं फैले रहते हैं कॉइन्स हर ड्रॉर्स में, मैं वो सब ढूंढ रही थी। आई वॉज जस्ट कलेक्टिंग इट। इतनी इनसिक्योरिटी हो चुकी थी इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि आई वॉज हेल्पलेस। मैं कुछ कर ही नहीं सकती, और वो भी कोविड टाइम में आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, कोई काम भी नहीं कर सकते हो, बाहर जाके कोई काम भी नहीं कर पाओगे। तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूंगी क्या, कैसे घर को चलाऊंगी। इस बीच में यही भूल गई कि मेरे को मेरे हस्बैंड मर गए हैं, तो उनके लिए मुझे रोना है, आई हैव टू, मतलब मुझे अपना वो दुख निकालना है, वो भी चीज़ भूल गई। मैं ये भी भूल गई कि मेरे हस्बैंड मर चुके हैं। मैं बस यही फोकस करी थी, मुझे घर चलाना, मेरे बच्चों को खड़ा करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनके दिमाग में से भी निकाल देना है कि दे डोंट हैव अ फादर। One of the days, okay, I had picked her up from my mom-in-law's house when I returned from work, and I think I didn't have a great day. I used to drive 2.5 hours up and down. I picked her up, put her in the this thing car, and I think I asked her, "Did you eat your lunch dabba?" So she says, "No, I didn't like it." So I said, "What do you mean you don't like it? Morning the cook Maushi didn't come. I cooked for you. I put efforts to cook for you. I made you dabba. I go hungry. I go and work, and you didn't." And I went. I think I blasted my whole day's stress completely onto her. She said, "If you shout like this, no, nobody will listen to you. Stop shouting like this." And that really hit me very hard. For me to put across my message, pain, or her need to eat her food on time, I could have handled without shouting. So yeah, the journey of becoming a better parent had started, and I was becoming calm and calm by the day, every day. And then when the journey, it so happened that my children had already started going to Montessori school when they were 19 months old. This is around the same time where that incident happened of me shouting my children. So I had thought कि चलो अभी anyways I also need to start getting back to dentistry, and I think it's time that children also start staying away maybe, and I was figuring out which is a good place where my children would be when I am going for dentistry.
So I had seen a nice Montessori school for my children, and my husband and I, we decided, chalo, let's put our children to this Montessori school. And this was not to teach anything to my children. मुझे मेरे बच्चों को आइंस्टाइन नहीं बनाना था. For me, मुझे बस वो 3 घंटे चाहिए थे जब मैं बाहर जाऊं और वो लाइफ जीऊं जो मैं हमेशा जीती थी, being a dentist. My children are my first priority, yes, because they are such tiny beings. They needed my full attention at that time. But at the same time, I realized I need to find myself too. I need to get that old version of myself too. So I decided, चलो मैं डेंटिस्ट्री करूँगी, 3 घंटे ही करूँगी, और मेरे बच्चे तभी स्कूल में रहेंगे और फिर मैं क्लिनिक से उनको पिकअप करके घर आऊँगी. सो आई विल बी लाइक अ पार्ट टाइम डेंटिस्ट एंड अ फुल टाइम मदर. ये डिसीजन ले लिया. एंड देन सो मैनी एडवाइजेस. इतने जल्दी बच्चों को स्कूल में कैसे डाल दिया, इतने छोटे बच्चे हैं, और 1 साल रुक जाती, इतना क्या पैसे कमाने की जल्दी है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ एडवाइस, guilt tripping me. For so long, I was going through this difficulty. Where were all these people who were giving me all this advice? मेरी डॉटर को, जिसको पता था कि पापा ऐसे म्यूचुअल फंड संभालते हैं, ये सब चीज़ें हैं पापा की, तो जब हम म्यूचुअल फंड को हम अपने मेरे नाम पे कन्वर्ट कर रहे थे, they were lost. They couldn't convert it on my name. हमने ऑनलाइन किया, it was all lost. It was there in the market, but it was lying without कि किसके पास जाएगा ये. It was like a diseased person's mutual fund was lying in the market. अब इसको रिकवर कैसे करें? उसकी भी एक लड़ाई शुरू हो गई. उसमें बहुत सारी कंपनियों ने बोला ठीक है, you just fill up the forms, we'll work it out for it. But some companies said no, we want succession certificate. Succession certificate इस टाइम पे लाना, कोविड में कोर्ट केस करना, कैसे करेंगे? कौन हेल्प करेगा? It was, कहते ना, ये सब चीज़ें जब हो रही थी, कहीं ना कहीं से लोग ऑटोमेटिकली आते जा रहे थे सामने. And it was not an easy affair. So there is no comparison. I'm happy today's mothers, whoever would have much more support, there is much more larger community, there is much more awareness, and people come out and open and talk about things. Our times, we were still struggling. We were still struggling. I didn't know what a motherhood was. By the time I could accept the changes within me, by the time I could understand Rihanna and accept, we were thrown into a next new challenges. Without much of support here and there, was demanding. So yes, it's not about generation gap, but the times have changed and they would change for better for everyone. अपने challenges को cross करते हुए मैं भगवान से लड़ रही थी कि मैं दूसरा बच्चा चाहती थी. आपने मुझे दिया भी, लेकिन not at this cost. I want Rishabh. तो फिर भगवान ने मेरी सुनी, and I have been blessed with 2 beautiful kids. क्योंकि टैंट्रम्स होते थे, बच्चे कभी ये खा रहे हैं, कभी वो नहीं खा रहे, उनके बिहेवियर मैनेजमेंट कैसा करना है, तो ये सब सीख भी रही थी और बच्चों पे मैं ट्राई भी कर रही थी. सम थिंग्स वर वर्किंग, सम थिंग्स वर नॉट वर्किंग. तो ये सब तो चल ही रहा था, एंड लाइफ वाज ऑल क्वाइट सेटल्ड, एंड आई वाज आल्सो बिकमिंग अ बेटर पर्सन इन टर्म्स ऑफ, यू नो, अभी बच्चों का मैंने फॉर एग्जांपल आई हैव लर्न दैट रोल मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे ना बहुत पार्ले जी विद चाय खाने का बहुत आदत था. But when people said that, you know, that it's not good for children, और बच्चे तो देख रहे हैं, मम्मा तो खा रही है, तो मैंने वो हैबिट भी स्टॉप कर दिया, बिकॉज अभी बच्चों को मैं वो नहीं खिला सकती, तो मैं उनके सामने नहीं खाऊंगी. सो दैट्स जस्ट वन एग्जाम्पल वेयर आई फील मैं सुधरने लगी. माई चिल्ड्रन बिकेम दैट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेकिंग माई लाइफ बेटर. फिर एक किसी ने सजेस्ट किया कि ही इज़ नंबर 1 एडवोकेट, तो उनके थ्रू केस रन किया, एंड इट वाज हिज एफर्ट्स कि हमारा केस विद इन 8 months टाइम में कंप्लीट हो गया. एंड इट वाज सच अ रिलैक्सेशन. जिस दिन मेरे को वो एडवोकेट, इट वाज माय लास्ट केस ऑफ दैट पर्टिकुलर सीजन, और जैसे ही जज ने वहाँ पे मेरे पेपर्स साइन किए, आई वाज सो रिलैक्स्ड. ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सारा टेंशन खत्म हो गया.
अपनी चीजों पे, इन चीजों को अपनी चीजों पे नाम करना, वापस अपने इस पे लाना, इट इज अ बिगेस्ट वर्क. मेरे जो भी चैलेंजेस थे लाइफ में, मैं बीच में भूल गई थी. आई एम द क्वीन ऑफ माई हाउस, बट आई फॉरगॉट दैट, एंड आई फॉरगॉट टू लव माई सेल्फ ऑन द वे. When I realized this, I started learning again how to love myself. I made myself my priority, and after that I won 2 beauty pageants and 2 titles in beauty pageant, and got a Dada Saheb Phalke award. Love is a very strong emotion, you know, and it's a miraculous when things can happen. Rihanna does have a desire to have a partner, to get married, have her own small world, saying my family, my husband, my partner, my kids, my house. I would be blessed and glad if she gets somebody, and she would get somebody. And I would always say we are there to support her. Very much around, because that will always stay. But yes, she wants to live, she can do it, I'll be supportive on to that. मतलब nothing is impossible. उन बच्चों को सिखाने का एक तरीका होता है, और वो मदर्स को सिर्फ डिसहार्टेंड नहीं होके पूरा पोटेंशियल बच्चों का निकालना चाहिए बाहर. तो देयर इज नो लुकिंग बैक. Children, because of my children, I think I became a better person in terms of my emotional regulation. It was a new me. The Janice before the birth of her children was somebody, and after the children, I think I was somebody else. कितनी भी तकलीफें आए, लेकिन यू विल बी ऑलवेज हैप्पी. उनकी खुशियों में खुशी, उनके दुख में दुख. इट गोज दैट वे. सो हाँ, आज ये है कि मैं ये कह सकती हूँ, आजकल आज सुबह ही मेरे बच्चे कह रहे थे कि मम्मी वी आर प्राउड ऑफ यू. सो दैट मेड मी मोर हैप्पी.